Assalamu alaikum warahmatullah. So dear students, as we all know, this is class 9th, alhamdulillah, and the very first chapter of our subject bio is cell, the fundamental unit of life. Before getting exactly into the text and before exactly trying to understand the chapter, let us first try to understand few concepts which I personally do feel are very and highly important so as to get the better understanding of this chapter is concerned and simultaneously so far as our higher classes are also concerned. So we all know there is a concept known as origin of species. There are two widely accepted theories which are widely accepted all over the world. Theory number one is the theory of natural selection and number two is the theory of special creation. Theory of natural selection suggests that every organism present on the face of this planet, whether it's in the form of flora or fauna, has a common ancestor, and all organisms have evolved from a common ancestor. They have gone through different phases and different processes of evolution. Furthermore, it also suggests that they had been entirely different from whatever they are appearing at this very point of time. यानी बालफाजी देकर यूँ कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो पहले दिखते थे वो आज वैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं. Number two, theory of natural selection, special creation. Theory of special creation suggests that each and every organism present on the face of this planet, whether it's in the form of flora or fauna, have been created specially and specifically. Concept number two is, which is also the part of our chapter, is prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells are primitive and eukaryotic cells are highly evolved and highly effective rather. Concept number three is classification of kingdoms. So widely accepted theory and widely accepted concept is 5 kingdom classification so far as our subcontinent is concerned. So let me try to sum it up on the board. There is a famous scientist known as Whittaker. He has given 5 kingdom classification. Number 1, Protista. P-R-O-T-I-S. Protista. Monera, Protista, fungi, plantae, Animalia. So far as organization of these species is concerned, number 1. Number 2, concept number 2 is prokaryotes. Old or primitive, and eukaryotes, new or highly efficient. Take. Now, since this is also the part of our chapter, prokaryotic and eukaryotic cells are not having well-defined nucleus, they are not having membrane-bound cell organelles, and they are predominantly unicellular, and DNA is circular and double-stranded in shape. It's double-stranded, located in the nucleoid rather. Division is done through binary fission and budding. Furthermore, aerobic and anaerobic mode of metabolism is also found there, and they can switch between the two also simultaneously. And so far as these eukaryotic cells are concerned, there is well-defined nucleus, and there are membrane-bound cell organelles. DNA is organized, which is present in the which is in the form of linear chromosomes located in the nucleus, which is highly well defined. Cells defined in the form of mitosis and meiosis. Metabolism, so far as energy production and consumption is concerned, is done in cytosol and mitochondrial matrix. अब जो कि ये क्लासिफिकेशन जो कि विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन फिर भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें एक मुस्तकिल क्लास ही चाहिए, बल्कि 2-3 क्लासेस इसमें चाहिए, क्योंकि इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है. जैसे फिर आगे जाके इसमें होता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो इसी तरह से मुझे अब इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि यू माइट बी थिंकिंग दैट लेट्स ट्राई टू गेट इनटू द एग्जैक्ट चैप्टर नाउ, व्हिच इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहले बाहर की बात कर लेते हैं, यानी कमरे के बाहर जो उसकी दीवारें वगैरह होती हैं, पहले वहाँ की बात करते हैं. सो फार एज द सेल इज कंसर्न्ड, वी कैन बेटर अंडरस्टैंड इट्स लाइक अ कंपार्टमेंट और ए रूम. ये आउटर चीज़ आपको आसान चीज़ मतलब जो इसकी कंपार्टमेंट के एतबार से, इसकी स्ट्रेंथ के एतबार से जो बाहर की चीज़ें होती हैं. पहला इसमें ये होता है, सो फार एज प्लांट एंड एनिमल सेल इज कंसर्न, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस. पहला तो ये होता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है जो दोनों में होता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. उसके बाद होता है न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बॉस ऑफ द सेल. और उसके बाद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी जो कमरा है और कमरे में जो खाली जगह है,
उसके बाद आते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो उसमें मतलब आप ऐसे समझ लीजिए जिनकी अलग अलग अपना अपना एक काम होता है। और उन सेल ऑर्गेनल्स में पहले तो ये बाहर के पार्ट्स हो गए, अब उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म में जैसे ये एम्बेडेड होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें और साइमल्टेनियसली आई वुड लाइक टू ऐड टू योर नॉलेज वो ये कि डीएनए जो होता है वो इन द न्यूक्लियस होता है, और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दैट कम्स इनटू बीइंग एंड वो एक्टिव हो जाता है उस वक्त। इज एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, ये मैं समझाना चाहता हूँ, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीज सेल ऑर्गेनल्स जो वेल डिफाइंड होते हैं यूकैरियोट्स में, दैट वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। उनमें क्या क्या होता है, उनमें जैसे फॉर पहले माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पहले तो, और तो लास्ट में तो कुछ ऐसा नहीं है। तो सो फार एज ऑल दिस सेल ऑर्गेनल्स आर कंसर्न्ड, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू नेक्स्ट, जैसे एसईआर होता है और आरईआर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सो फार एज द सिंथेसाइजिंग ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स इज कंसर्न्ड, ये एसईआर में होता है। एंड सो फार एज द सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन्स इज कंसर्न्ड, वो आरईआर में होता है, जिनमें आरईआर में जो राइबोसोम्स होते हैं वहाँ एग्जैक्टली तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और उसके बाद डिस्पैच, जो भी मटेरियल यहाँ पे बनता है, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन्स और फैट्स, वो पैकेजिंग को डिस्पैचिंग का काम करती है गोल्गी apparatus। उसके बाद प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कलर टू द प्लांट्स सेल्स रादर, बिकॉज उनमें फिर आगे जाके फोटोसिंथेसिस करना होता है और क्लोरोप्लास्ट उसी की देन होती है। इसी तरह से फिर प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सिंथेसाइज करता है एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो फार एज द हायर एनर्जी लेवल्स आर कंसर्न एटीपी बनता है, एंड सो फार एज द लोअर एनर्जी नीड्स आर कंसर्न उसमें एडीपी बनता है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Furthermore, to add to your knowledge again, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो ये प्लास्टिड होता है, इनमें अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। कैच यू लेटर इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।